Hello everybody, welcome to Be With Sam. My name is Sam, I'm an IT professional and I make videos on life of software engineer, travel and all things fun. If you haven't subscribed until now, please consider doing it so that will hugely help in building the analytics of my channel. Today's vlog is going to be all about the different roles of information technology. A lot of you have asked me in several different videos when I filmed travel from Dallas to India via Qatar Airways, and a lot of you asked about what do I do, what's my work, what is the role of a software engineer, is IT developer different from software engineer, and a lot of people asked me how can I travel from India to America and what kind of visa do we actually need to be able to work here. So I'm gonna talk all about that maybe in different videos because it's gonna be very long and I don't want you all to get drained. So I'm gonna give you bits and pieces of information, but I'll do my best to explain you as best as I can. आज का ब्लॉग जो है मैं बात करूंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स के बारे में. डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोजीशन स्लैश रोल्स जो होते हैं कंपनी में. आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज आईटी डेवलपमेंट. हम बीए रोल के बारे में बात करते हैं, क्यूए के बारे में बात करते हैं. आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स इन इंस्टाग्राम. तो आई एम ऑल्सो एक्टिव इन इंस्टाग्राम एंड TikTok may, I'm trying to get there, but Insta may I'm very active, so please go ahead and follow me on Insta and we can chat more over there. Without further ado, let's get into the vlog. The first role that we are discussing is that of an IT developer. IT stands for information technology. Developer का काम होता है कोड लिखना, to write code, to develop the software. कोई भी ऐप जब आप देखते हो, let's say Walmart का ऐप हो गया या Target, Starbucks, Dunkin', तो वो जो ऐप होती है आपके आईफोन में या एंड्रॉयड में, उसके बैक एंड में एक्चुअली देयर आर अ zillion bits and pieces of code. These bunch of code give rise to a program and these bunch of program gives rise to a software. और इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि एक डिवाइस में चलता है. And that could be a phone, that could be your Mac, your Windows, anywhere. It can run on anywhere. तो उस प्रोग्राम को हम बेसिकली सॉफ्टवेयर बोलते हैं. And the job of the primary responsibility of an IT developer is to be able to write code. Now there are several ways you can define it. जैसे आपने आर्किटेक्ट के बारे में सुना होगा, and that is my second thing that I'm going to discuss. तो बहुत साल अगर आपके हो जाते हैं IT development में experience, so slowly and steadily a developer crosses into. So you basically start from a junior developer, junior IT developer followed by a senior developer. Now the timing of promotion is absolutely very different. It all depends how smartly you are performing it, how efficiently you are performing it. So you start off with a junior developer. कुछ साल बाद when you gain that expertise into a seniority level and position, तब जाके you become a senior developer. और बहुत साल जब आप senior developer के रोल में रहते हो, there are two ways you can move. Either बहुत सारे लोग होते हैं जो BA यानी कि बिजनेस एनालिस्ट, जो मैं अभी बात करने वाली हूँ, मैनेजमेंट के साइड में मूव कर जाते हैं. दे एंड अप मैनेजिंग द टीम, बिकमिंग IT मैनेजर्स. और बहुत लोग होते हैं जो पसंद करते हैं टेक्निकल साइड में रहने को. सो ईदर दे गो इनटू बीइंग लाइक अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, थिंग्स लाइक दैट. तो जब आप आर्किटेक्चरल रोल चूज करते हो तो देन यू हैव अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, और रादर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर. तब आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कोडिंग से थोड़ा डिफर कर जाता है. You have to build those architecture diagrams, you have to lead the team in a way. और तब आपके पास एक या दो सॉफ्टवेयर, एक या दो एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि दो डजन एप्लीकेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. एंड आई एम ट्राइंग टू डू दिस वीडियो गाइज ऑन अ वेरी बेसिक लेवल. आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग दी हार्डकोर टर्मिनोलॉजीज. मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ जिससे कि आप सब आसानी से समझ सके एंड यू ऑल कैन रिलेट टू व्हाट आई एम एग्जैक्टली स्पीकिंग. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी कमेंट्स, any questions, any concerns, feedback in the description box, in the comment section below, and I'll be more than happy to assist you.
Now, as I always say, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. जिस तरीके से आपने प्रोग्रेस करा होगा अपने प्रोफेशनल IT करियर में, everyone cannot be like that. So none can say कि अच्छा मैंने तो ऐसा करा है फिर आपके साथ ऐसा क्यों है. ऐसा नहीं होता है. Everybody has a different experience. IT डेवलपर के बारे में बोला, junior developer, senior developer, उसके बाद person they tend to go into the architect space, तो वो आपका solutions architect या software architect हो गया. The third role that I'm going to talk about is a business analyst. तो IT BA ये आपने काफी सुना होगा, और अभी जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन क्लाउड में मूव कर रहे हैं तो the terminologies are changing as well. तो अभी हम BA कम बोलते हैं, PO ज्यादा बोलते हैं. PO means product owner. तो एक IT की तरफ तो एप्लीकेशन टीम जो होती है उस तरफ एक IT PO होता है, और बिजनेस से जो हमें रिक्वायरमेंट्स मिलती है तो बिजनेस की तरफ एक PO होता है, तो उसको हम बिजनेस प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं. और अपने तरफ से जो एप्लीकेशन टीम से रिप्रेजेंट करती है जो BA/PO उसको हम IT प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं. Now the primary role of a business analyst is to continue working with the business to be able to understand the requirements, gather those requirements, understand it, bring it back to the application team, spread the understanding to the developers, write stories in a project management tool. It could be Jira, it could be version 1, create backlog and let your developers start working on it. ये होता है primary responsibility of a business analyst. Of course, the BA has to understand agility. I can again talk about agile terminologies. Maybe मैं एक दूसरा वीडियो बना सकती हूँ इसको लेके कि PM tools क्या होते हैं, what is Scrum, क्यों चाहिए sprint, what is Kanban and things like that. But ये होता है role of a BA and a PO. तो ये हो गया हमारा तीसरा. चौथा is basically your QA, which is a quality assurance lead. The role of a QA is to basically quality test your application. Now testing can be in varied forms. So बहुत different तरीके का testing approach होता है. Unit testing हो सकता है, regression हो सकता है, integration testing हो सकता है, UAT होता है, user acceptance testing. There could be sanity testing. There could be like a zillion format and pattern of testing. But जो भी testing के काम होता है, that is the prerogative of a QA. तो ये होता है QA का काम, and QA is always attached to an application team, and I'll talk about it in a bit. And then होता है someone called a IT manager, who is basically leading the entire team. So how a team is formed? Let me tell you that. तो उसमें हो गया आपके couple of developers, business analyst, quality analyst, IT manager, architect, और आपका हो गया SRE, which is a site reliability engineer, जो हो गया आपका DevOps guy, हो गया आपका DevSecOps person. तो the responsibility और ये जो रोल है ना, ये अभी कुछ साल आपको maybe I think it started 2015 or 2016 if I'm not wrong, and Google ने पहले शुरू करा था SRE का रोल. पहले ये नहीं होता था. पहले हमारे डेवलपर्स ही DevOps का काम किया करते थे, right? Monitoring, logging के काम किया करते थे, Sumo Logic, Dynatrace. We used a lot of tools before, just that कि हमारे पास वो नाम नहीं था that of an SRE. तो SRE हो गया जो आपके मॉनिटरिंग, they will monitor the logs, they will see application कब down है, up है, and things like that, production issues, incidents and all of that, because it all depends कि आप किस category of application में काम कर रहे हो. Is it like a mission critical, is it business oriented, business critical, and depending on the nature of the application आपको उस हिसाब की IT support की जरूरत पड़ती है. So these are actually the several people who work together to create your team. That is it for today's vlog. Thank you so much for watching. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe, and don't forget to come back for my next. If you have any questions that you want me to answer, please जाके comment section में जरूर डालना, and let me know what else you wanna hear from me. Thank you. Bye bye.